because today, again, thanks to our diplomacy, the TRF has been designated as a global terrorist organization by the US government. And the same Pakistani foreign minister who took so much pride saying, I defended the TRF, says, well, now if the US has done this, we accept it. So that is where the Security Council issue stood. If I could then, sir, move on to the diplomacy from 25th of April till the commencement of Operation Sindoor. During this period, there were obviously a number of phone calls, a number of conversations. At my level, there were 27 calls. At Prime Minister, I think almost 20 calls. About 35, 40 letters of support came in. And what we tried to do was to create a narrative, prepare the diplomacy for the launch of Operation Sindoor. And the result of that diplomacy, Honorable Speaker, sir, there are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. If you look through this period, and I would be very happy to share with the House the exact positions of various governments, overwhelmingly, there was recognition that terrorism is unacceptable, that a country which has been attacked has a right to defend itself, and that India was doing exactly that. Now, when Operation Sindoor was launched, we spelled out our objectives. There was a statement, Honorable Raksha Mantri ji referred to it in his statement, where we put out for the benefit of our own people, for the international community, that Operation Sindoor was hitting the terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks had been planned and launched. We highlighted that 9 sites had been targeted, and we said that our actions are focused, measured, and non-escalatory in nature. And we were living up to the commitment that those responsible for this attack will be held accountable. This was the commitment which was endorsed by the UN Security Council, thanks to our diplomacy. It was a commitment made by the Prime Minister to the people of India that we would hit those symbols, those sites, those planning places. So today, when I hear many questions from across the aisle, I want to say, which one of you imagined that Bhavalpur and Muridke would be brought down the way it was? Which one of you thought? When did you even think of it during your tenure? Did it even cross your mind? In fact, on the contrary, you ruled it out after 26/11. So I think our objectives are very clear. We wanted to send a message to the terrorists. We wanted to send a message to Pakistan that do not continue this support for terrorism. And I think on the morning of 7th of May, that message went home loud and clear. Now, sir, during this period, there was, when the operations were on, when the conflict, when the activities were on, operation is still continuing. A number of countries, number of their leaders, ministers, others called up. And they called up because people wanted to know what is happening. People wanted to know what is the thinking of India. People wanted to understand what we are doing. And I would like to share with the House, sir, through you, to everybody, we gave a common message. The common message was India is exercising its right to defend itself against terrorism. Number 2, the targets which were hit on the 7th of May are known terrorist headquarters and infrastructure. Number 3, there will be no mediation. Anything between us and Pakistan is bilateral. Number 4, we will never bow down to nuclear blackmail. Number 5, we are responding to Pakistani military attacks because after Operation Sindoor was launched, they had started targeting our military facilities. And we will continue to hit the Pakistani military. If the fighting is to stop,
Pakistan must request it. And that request must come through the designated channel of DGMOs. This was a common message that we had given to many people who had called us during that period. Our position was very, very clear in how we were approaching the progress of Operation Sindoor. Now, sir, many members asked, some out of genuine curiosity, some perhaps less, what was the international support? How much international understanding was there of India's position? I would like to share with you a sample. So let me start with countries who are known to be partners of India. Quad. Quad gave a statement which says, the Quad unequivocally condemns all acts of terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. We condemn in strongest terms the terrorist attacks in Pahalgam on 22 April and call for perpetrators, organizers, and financiers of this reprehensible act to be brought to justice without any delay. Now, sir, this is the Quad. Now, let us look at a different grouping, BRICS. Now, BRICS has China as a member, Russia as a member, it has Iran as a member, Brazil, South Africa, Egypt. BRICS also condemned the April 22 attack. It reaffirmed its commitment to combating terrorism, again including cross-border terrorism. Now, I would like members of this House to understand, if India is attacked, if there is a terrorist attack on India and a country says we condemn cross-border terrorism, I think it is obvious to everybody what that cross-border terrorism is. So, I then move on, sir, to the Central Asia. The Central Asian countries opposed providing safe haven using terrorist proxies for cross-border terrorism, for terror financing. Now, I can cite statements from the Indian Ocean Rim Association, from individual countries, range of them. President Putin, for example, has said, he wrote to our president and said this brutal crime has no justification whatsoever and its perpetrators will face a deserved punishment. The president of Paraguay has said that he expresses solidarity and recognized India's legitimate right to self-defense. So the main point, the common thread, sir, which I would like to bring out is that number one, cross-border terrorism across the board has been recognized, all forms and manifestations, opposition to condemnation of Pahalgam terrorist attack, and the right of India to bring people to justice. Now, sir, in addition to that, I would particularly like to mention 2 or 3 other developments. One, the American designation of TRF. On the 17th of July, the Department of State designated TRF as a foreign terrorist organization and a specially designated global terrorist. Now, this comes in the wake of the extradition of Tahavur Rana, who was involved in the 26/11 attack. And when people ask today, how successful is your foreign policy? Where is your diplomacy? I want to say that Tahavur Rana, which many of you tried for so long to get, is finally here because of us. I want to say TRF was designated not because somebody out there made a remark. TRF was designated as a global terrorist organization because our diplomacy persuaded another country to do that. Now, our strong stand, sir, has resonated across the world. I was some time ago in Germany, and standing next to me, the German foreign minister said, India has every right to defend itself against terrorism, and Germany will support this fight against terrorism. Similar position has been taken by France. Similar position has been taken by the European Union. So what I would like to
to highlight, sir, is that today, where Operation Sindoor is concerned, there has been, the world sees what it is about. The world realizes this is a fight against terrorism. It is felt that India has acted responsibly but firmly. Now, I would like, sir, to address one particular aspect because some members have brought it up. And this is regarding the US activity during this period. Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th, the 9th, 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। Honorable Speaker, sir, in the course of the debate today, some points were made by members of the opposition. I would like to respond to some of them. We were asked, why did you stop at this time? Why did you not go further? Please see who's asking this question. This question is being asked by people who, after 26/11, felt that the best action was inaction. Now, I would like, sir, to read out, because one member said, nowadays BJP members like reading from books. You get the truth in books. Sometimes you don't like what we read in books. So
let me read out, sir, two excerpts from a book by the National Security Advisor of the UPA government. After 2611, a chapter, this is a book called Choices. He says, on sober reflection and in hindsight, I now believe the decision not to retaliate militarily, but to concentrate on diplomatic, covert, and other means was the right one for that time and place. This is what he says. But did he even do that? Because 2611 happened in November of 2008. What was the reaction? The reaction was Sharm el-Sheikh. Was that diplomatic? Was it covert? Was it military? Now, what did Sharm el-Sheikh do? In Sharm el-Sheikh, the then government and the Pakistani Prime Minister agreed terrorism is a main threat to both countries. Now, today, sir, people are saying, you know, America is hyphenating you, Russia is hyphenating you. That is what I heard Deepinder Huda ji say. Hello, you are hyphenating yourself. I mean, you did not need a foreign country to say, please link India to Pakistan. Your own government was saying, you know, India and terrorism is a main threat to both countries. And then they said, terrorism should not be linked to the composite dialogue. And worst of all, they accepted a reference to Baluchistan in that. Now, here is a country reeling after 2611. And you are equating Baluchistan and 2611, what happened in Mumbai, and you are saying that the perpetrator and the victim have both got a problem. And then now you are asking me, why didn't you go further? People who did nothing are asking a government which did so much, saying, why didn't you do more? Now, you might think, sir, that this is a one-off, but this is a habit, because this is the thinking in that part of the house. Some years ago, there was, if you remember, sir, the Mumbai train bombing. The Mumbai train bombing happened in July of 2006. In September of 2006, 3 months after the Mumbai train bombing, at Havana, the UPA government, with its Pakistani counterpart, condemns all acts of terrorism as though we are both again equal, and agrees that it's a scourge that we need to effectively deal with together. And then they directed again resumption of dialogue. So what I want to highlight is, for people who did nothing to have the temerity, the gumption today, to ask a government which did so much, which brought down Bhavalpur and Muridke, to say, why didn't you do more? I think it's extraordinary. Now, sir, we also heard from one of the early speakers saying we are now facing a two-front, and that the leader of opposition has been warning us about two-front. Now, all I can say, sir, is the person who said it, and maybe the leader of opposition, must have missed their history lessons in school. I'll tell you why. Because I would like to walk you through the history of this two-front. The two-front started because of something called POK. POK was created in 1948-49 by the government of this country by not completing the job of what was to be done. Now, sir, the House should note these dates. The two fronts started 1963, when the Shaksgam Valley was ceded by Pakistan to China as a result of an agreement. Then in 1966, the Karakoram Highway was agreed upon, which took 20 years, was completed in 1986. Now, references were made to China-Pakistan military collaboration. So when did this collaboration start? I'll give you the year, 1966. In 1966, the first Chinese military supplies went to Pakistan. When did nuclear collaboration start? 1976. 1976, when Bhutto arranged for China, Pakistan to get together on this. And in 1980s,
When Prime Minister Rajiv Gandhi was visiting China and Pakistan, that was when the nuclear collaboration was at its height. Now, let me go further. You will say, why are you talking history? So let me bring this further up. 2005, Pakistan-China Treaty of Friendship and Cooperation. 2006, Pakistan-China Free Trade Agreement. 2013, handing over of Gwadar to China, Gwadar port to China. May 2013, announcement of China-Pakistan Economic Corridor. So, sir, we are getting warnings about a US-China, Pakistan-China collaboration, when this collaboration has been going on for 60 years. Now, let me also address two other points. There was a reference made to IMF that, why did you not stop? Why did you not stop? आपने सवाल उठाया तो जवाब भी सुनना पड़ेगा. आपने उठाया ना, आपके उपनेता ने उठाया, आपने सुनो जवाब. अब जैसे सवाल करोगे वैसे जवाब सुनने पड़ेंगे. Sir, the IMF loan which was given was approved in September 2024. It was an extended fund facility of $7 billion. Now, sir, the House should know, Pakistan is a serial borrower from the IMF. I think 16 or 17 times they have taken IMF package. Now, very interesting comparison, sir. In 2008, Pakistan got a standby arrangement of $9.70 billion. In 2013, it got another one of $5.9 billion. So the very people who are concerned today at a $7 billion package should remember a $15 billion package went through for Pakistan during that tenure. Now, reference was made, sir, to FATF. I want to say the longest period that Pakistan has been under FATF grey list has been under the tenure of the Modi government. During the Modi government, from 2018 to 2022, 1,576 days, Pakistan was in the grey list. Yes, they were in the grey list earlier also. I am not denying that. It was for a shorter period. But I again want the House to appreciate that the FATF meeting in May 2025 has kept Pakistan in the enhanced follow-up category, recognizing that the compliance of Pakistan is only partial. Now, sir, so much for Pakistan. Some members also raised issues pertaining to China. So I would like to spend a few minutes on that. So I would first like the House to appreciate, because today we are getting these lectures saying China is a great danger, China, Pakistan are together, we are warning you. So what does the Congress party really think about China? Don't go by what they say. Let us see what they did. In 2005, China was designated as a strategic partner during Prime Minister Wen Jiabao's visit to India. Strategic partner. And there is a concept, very famous concept called Chindia, sir, a belief that China and India have common interest. And the main proponent of Chindia is the party spokesman of the people opposite. Now, some mention was made about visits, including my visit. Yes, I went to China. I went to China to make our position very clear about de-escalation, about trade restrictions, and about terrorism. I did not go to China for the Olympics. I did not go to China for secret agreements. I did not go. So the House should know that people were watching Olympics when China was issuing stapled visas for people from Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir. This is the reality of China. Now, let me really tell you, sir, how is the relationship with China. Some years ago,
संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं है हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। We heard today a lot about what was supposed to be the thinking. बैठे बैठे, आपको इजाजत नहीं, बैठे बैठे। Sir, we heard about warnings about China, cautions about China. You know, China is planning this, China is planning that. But sir, I want to remind this House, Doklam crisis was on. The leader of opposition decided to get a briefing from whom? Not from the government, not from the emir, from the Chinese ambassador. He took his briefing from the Chinese ambassador when our military was confronting the Chinese military in Doklam. So I want to say that I want to say, and this is the political thinking. Let me, sir, give you the economic thinking. In 2006, the UPA government... प्लीज बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए, आप बहुत कर रहे हो, नहीं, गलत है, बैठिए, बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए। Sir, in 2006, because I want to illustrate my points with facts. I spoke about political facts, I spoke about border facts. Let me give you an economic fact. What is the economic thinking of the Congress party about China? In 2006, the Congress party agreed to do a regional trading arrangement with China. It was finalized during the visit of President Hu Jintao. A task force was appointed. The task force gave a positive recommendation. Through the efforts of various people, this did not happen. Let me give you the technology side. The very people today who are cautioning us on China are the people who allowed 3G and 4G to come from China. It is this government which made sure there was a made in India 5G. And finally, sir, we keep speaking about the border. The border, if today, whether it is the border with Pakistan, whether it is the border with China or any other border, if our military is today able to stand its ground, the kind of massive deployment that we saw on the China border after 2020, it is because our border infrastructure budget has gone up 4 times. Our tunneling, our road building, our bridging has doubled or tripled. And this is a far cry from the period when the thinking was, let's not develop the border because then the Chinese cannot come there. We had 60 years of neglect of the border. Today, in the last 10 years, that neglect has been reversed. There is still a lot of work to be done. So I think people need to understand. And it's not just in India, sir. We have just come back from Maldives. When I hear comments about foreign policy, yesterday, day before yesterday, the Prime Minister was the guest of honor at the Independence Day of Maldives. This is the country which during their time forced an Indian company to leave an airport. That country today has invited India to build 2 new airports. Look at Sri Lanka. If the Hambantota port was built between 2005 and 2008, and at that time it was actually justified as saying that it has no impact on India's interest. So I want, sir, the House to appreciate that the people who are today claiming to be custodians of national security thinking, who say that they are giving warnings,
Let us look at the record. Let us see what they did when they were in office. But now allow me to come back to Operation Sindoor. So I want, sir, to conclude by saying this. The challenge of cross-border terrorism continues, but Operation Sindoor marks a new phase. There is now a new normal. The new normal has 5 points. 1, terrorists will not be treated as proxies. 2, cross-border terrorism will get an appropriate response. 3, terror and talks are not possible together. There will only be talks on terror. 4, not yielding to nuclear blackmail. And finally, terror and good neighborliness cannot coexist. Blood and water cannot flow together. This is our position. So let me conclude, sir, by recognizing the role which this body and the upper house has played during this period in explaining our national position and our national interest on Operation Sindoor. We had, sir, 7 parliamentary delegations which went to 33 countries. Some comments were made about those delegations. I have to tell the honorable member, Arvind Savantji, I'm sorry, you are completely misinformed. Those delegations were received with great honor. In many cases, the foreign minister of the country met them. Please look at the tweets of people sitting next to you. That itself will tell you. And इनके बगल वालों से पूछ ले जानकारी. Sir, these 7 delegations, the delegation led by Ravi Shankar Prasad ji, by Shashi Tharoor ji, by Baijan Panda ji, by Sanjay Kumar Jha ji, by Kannimori ji, by Supriya Sule ji, and by Shrikant Eknath Shinde ji. So these 7 delegations did the nation proud. They across the board, and every member, members of opposition, members of the government, public-spirited citizens, retired diplomats, they were able to explain to the whole world our posture of zero tolerance against terrorism. So I would like, sir, to end my remarks with the hope that on an issue as important as this struggle against terrorism, we can only succeed in ensuring zero tolerance against terrorism if we have a united voice in this country against terrorism. There must not be any division of opinion on this matter. The way the parliamentary delegations behaved abroad, I hope the same solidarity will permeate the proceedings of the House. I thank you. Shri Mia Altaf Ahmed. बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं उस पार्लिमानी हलके से हूँ जहाँ पे ये पहलगाम का वाक़या हुआ, और बदकिस्मती की बात है कि 26 बेगुनाह लोग मारे गए। मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं बयान कर सकूं इस बुज़दिलाना, अहमकाना और ब्रूटल किस्म के अटैक का। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और इसके लिए अल्फाज ही नहीं। पूरी दुनिया जो है वो इस वाक़े के बाद लर्ज़ गई। पूरी दुनिया में इस वाक़े के बाद खौफ तारी हो गया, और इसी तरह पूरा जम्मू कश्मीर भी बग़ैर किसी कॉल के, बग़ैर किसी प्रोग्राम के इस वाक़े के ख़िलाफ़ निकला और इसकी मज़म्मत की। कई घर ऐसे भी हैं, बल्कि बहुत से घर ऐसे हैं जहां उस दिन लोगों ने खाना भी नहीं खाया और जहां उस दिन लोग सोए भी नहीं। आज
जो ये वाक़या हुआ, जो हमें टेलीविज़न पे उनके परिवार देख रहे होंगे, उनके ज़ख्म आज फिर ताज़ा हो रहे हैं और हमें उन्हें ये भरोसा दिलाना है, हमें उन्हें ये बताना है कि हम उनके साथ हैं। और मुझे यकीन है होम मिनिस्टर साहब इधर बैठे हुए हैं कि ज़रूर उन कातिलों को सज़ा मिलेगी जिन्होंने ये काम किया। और हमारा मुतालबा भी आपसे यही है कि उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि पूरी दुनिया के साथ साथ उनके ख़ानदान के लोग जो हैं वो ये देख सकें। इसी के साथ ऑनरेबल स्पीकर, इस तस्वीर के दूसरे रुख पे जब दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई हुई, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो रजौरी और पुंछ, वो भी मेरे पार्लियामेंट्री हलके में आता है। बदकिस्मती की बात थी कि रजौरी और पुंछ में भी बॉर्डर की शेलिंग में, जो बॉर्डर के उस साइड से हुई, जो अटैक वहाँ से बाद में पाकिस्तान से हुआ, तो 17 कीमती जानें जो हैं वो इस अटैक में गई। उनमें बच्चे भी शामिल थे, उनमें बूढ़े भी शामिल थे, उनमें नौजवान भी शामिल थे। पुंछ का शहर जो एक तारीख़ी शहर था, जो एक तारीख़ी शहर है भी, जो एक ज़माने में एक रियासत होती थी, पहली बार वहाँ पे जंग 47 में भी हुई, 65 में भी हुई, 71 में भी हुई, लेकिन आज पहली बार उस पुंछ के शहर पे गोले गिरे और पुंछ का सारा शहर, पूरी आबादी वहाँ से मुंतकिल हो गई। उस शहर में खौफ आता था जब आदमी वहाँ पे उस अटैक के बाद भी गया। मैं गया तो मैंने देखा कि लोगों ने अपने घरों में सामान छोड़ के, घर छोड़ के वो भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए। इसी तरह रजौरी का शहर है, वहाँ पे अटैक हुआ, 3 बेगुनाह लोग वहाँ मरे और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मिस्टर थापा, जो बेहतरीन अफसर थे, ऑनेस्ट अफसर थे, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में सबसे अच्छा काम किया था। बदकिस्मती की बात थी कि उनके मकान पे भी शल गिरा, उस सरकारी क्वार्टर पे, और उनकी जान भी गई। उस रजौरी शहर में कई मकाने, दुकान, कारोबारी इदारे, माल मवेशी, वो भी तबाह हुए। पुंछ में जब अटैक हुआ, होम मिनिस्टर साहब वहाँ गए। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, ये पुंछ उस वक्त गए, इन्होंने खुद वो हालत वहाँ पे देखी कि वहाँ पे गुरुद्वारों पे भी अटैक हुआ, मस्जिदों पे भी हुआ, मकानों पे भी हुआ, और कितनी वहाँ पे तबाही थी, कितना वहाँ पे खौफ था, कितनी वहाँ पे दहशत थी। हम तो सिर्फ अल्लाह ताला से सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि दोबारा ऐसी आफत इन बॉर्डर एरियाज़ में ना आए। ये बॉर्डर के लोग जो हैं, इन्होंने हमेशा मुसीबतें देखी हैं, हमेशा प्रॉब्लम देखे हैं, हमेशा तकलीफ़ें देखी हैं। आगे से कम ये जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका मुआवजा तो गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन और मुआवजा उन लोगों को देने की ज़रूरत है जिन लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे जानी नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे मकानों का, दुकानों का, बिजनेस अदारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं साथ साथ ऑनरेबल स्पीकर, 3 दिन पहले जम्मू में एक परवेज नाम का लड़का 20 साल का पुलिस की फायरिंग में मारा गया, एक गुजर कम्युनिटी का लड़का। मैं ये चाहता हूं कि जो भी ये इनोसेंट किलिंग हो रही है, होम मिनिस्टर साहब उसका नोटिस लें और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दिन दिहाड़े एक 20 साल के बच्चे को गोली मारते हैं। अगर कानून उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा
तो लोगों का कानून से एतबार उठ जाएगा। ये वाक़या भी मैं आपके सामने बयान इसलिए करना चाहता हूँ कि कश्मीर में ऐसे वाक़ात होते हैं और फिर उन पर कार्रवाई नहीं होती है। होम मिनिस्टर साहब से मैं ये भी कहूँगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम अटैक के बाद, जो लोग अगर कोई इनोसेंट पकड़े गए हैं वो जेलों में हैं, उनके मामलों को दोबारा देखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। और जो लोग बेगुनाह हैं वो बंद नहीं रहने चाहिए। इसके साथ साथ ही सर, बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं जहां पहले भी जंग ने नुकसान किया और आज भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वहां बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, वहां पे बंकर्स बनने चाहिए। वो सबसे बड़ी डिमांड थी। जो भी वहां पे गया लोगों ने इस बात की डिमांड की। और रेलवे मिनिस्टर साहब यहाँ पे हैं, रजौरी और पुंछ को कटरा आज ट्रेन चली गई है, कटरा से फिर कश्मीर ट्रेन गई है, तो नेशनल इंटरेस्ट में इनको चाहिए कि ये रजौरी के लिए रेल लाइन दें, क्योंकि हज़ारों की तादाद में रजौरी और पुंछ में फौज के नौजवान रहते हैं, बीएसएफ वाले रहते हैं, सीआरपी, और वहाँ के मुकामी लोग रहने वाले जो हैं उनको एक सहूलियत जो है वो मिल सकती है। और इसके साथ साथ मेरी ये गुजारिश होगी कि इन इलाकों में जहाँ ये वाक़यात हुए हैं वहाँ पे कुछ न कुछ ऐसे इंतज़ामात किए जाएं कि आइंदा अगर ऐसे वाक़यात हों तो मुकामी आबादी जो है, जो निहत्ते लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, वो इसकी जद में ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री छोटेलाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे नेता पीडीए के मसीहा, देश प्रदेश के करोड़ों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत, देश के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश से आज एक बेहद गंभीर विषय पहलगाम आतंकी हमला पर बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूँ। पहलगाम में हमारे पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, जो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, अपितु यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान और घिनौना प्रहार था। परंतु अध्यक्ष महोदय, इससे भी अधिक दुखद घड़ी वह थी जब देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पर बिना कुछ बोले दूसरे ही दिन बिहार में सभा को संबोधित करने चले गए। जब देश जल रहा हो, जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान पर आंच आई हो, तब देश के प्रधानमंत्री जी बिना कुछ बोले शांत रह जाते हैं। यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि लोकतंत्र के मुंह पर तमंचा है। सेना के शहीदों पर चुनावी भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी अब इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मौन क्यों बैठे हैं? देश और मारे गए पर्यटकों के परिवारजन पूछ रहे हैं। जब कमरे होते हैं तब आंसू बहाते हैं, लेकिन जब जवान शहीद होते हैं तब सत्ता में बैठे लोग इवेंट मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। यह वही सरकार है जिसने पुलवामा के नाम पर चुपचाप शूटिंग जारी रखती है, और वही ये सरकार है जो जब मणिपुर जलता रहा है तब भी मौन धारण किए रहे हैं। कुंभ के दौरान प्रयागराज घटना में भी भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों को, घायलों का कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही रेलवे स्टेशन पर हुए घटना के पूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए गए। वैसे ही पाकिस्तान में मारे गए 4 आतंकियों का आंकड़ा पेश नहीं किया गया कि नहीं जो आतंकी आए थे पर्यटकों को मार के चले गए, वो मारे गए कि नहीं मारे गए, कोई आंकड़ा पेश नहीं किया गया। आज मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या यही है न्यू इंडिया, जहां प्रधानमंत्री जी शोक पर भी राजनीति करेंगे, सभा करेंगे? क्या यही है अमृतकाल जहां देश के मुखिया सदन से भाग रहे हैं और विदेश जा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे? जब आप सदन में नहीं रहेंगे, सदन में बात माननीय सदस्यों को नहीं सुनेंगे, तो कैसे जवाब दे पाएंगे? और आप 11 सालों में विदेश कहां घूमे हैं, लेकिन जब समय आया सपोर्ट करने का भारत का, तो कोई देश आपका साथ नहीं दिया। इसलिए
कमजोर प्रधानमंत्री माना गया और 200-300 किलोमीटर दूर बहुत ही खतरनाक हथियार AK-47 और M4 कार्बाइन साथे लेकर 4 आतंकी बॉर्डर पर करके भारत चले आए और हमला करके चले गए। आम नागरिकों, पर्यटकों की क्रूरतापूर्वक हत्या करके आसानी से चले गए। महोदय, पाकिस्तान बॉर्डर से भारत के बीच बहुत ही बड़े शहर जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, पटनीटाप, रामबन, बनिहाल, अनंतनाग है। इन जगहों पर पार करके पर्यटक स्थल पहलगाम तक कैसे पहुंचे? सारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? यह भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में बहुत बड़ा सवाल है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। इसी कारण पाकिस्तान, चीन इत्यादि देश इन्हें कमजोर प्रधानमंत्री समझ करके बराबर हमारे देश पर आतंकी हमला करते रहते हैं और भाजपा की सरकार के दौरान ही अधिकतर हमले चुनाव के आसपास तक होते रहते हैं। मित्रों, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी चुप काहे बैठते हैं, सदन में क्यों नहीं आते हैं? याद करना चाहिए 1965 की लड़ाई, याद करना चाहिए 1971 की लड़ाई और वो भी 1857 वाली, जब देश गुलाम था और गुलामियों के जंजीरों में जकड़ी हुई भारत मां करा रही थी। हमारे देश के क्रांतिकारी रणबांकुरे जवान सिपाहियों ने इस वतन के बलवेदी पर आत्माहुति दे करके इस देश को आजाद करवाया था। वही पश्चिम बंगाल के धरती से नेता सुभाष चंद्र बोस ने ललकारा था, अरे हिंदुस्तानियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। तो वही झारखंड, बिहार के धरती से लीलांबर पीतांबर खरवार की धरती से जो है कि तलवार चमक रहा था, अरे अंग्रेजों, भारत छोड़ो वरना ये पिस्टल की गोलियां तुम्हारे जेबड़े में उतार दी जाएगी। ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई भाई मिलकर के देश को आजाद करवाया। तो क्या आतंकी हमला होने के लिए करवाया? जब हमारे देश के जवान मार रहे थे घुस कर पाकिस्तान में, तो कारण क्या था कि नहीं ट्रंप ने जो है कि सीज फायर करवा दिया। इसलिए मित्रों, आपसे मेरा कहना है कि यह कसम है जवानी की जागो जवानों, अरे कसम है जवानी की जागो जवानों, जरा गर्व से सर उठाना तो सीखो। आज जो तीर तुम पर चलाया है जालिम, वही तीर उस पर चलाना तो सीखो, वही तीर उस पर चलाना तो सीखो। अब पहलगाम के संदर्भ में भी वही चुप्पी साधे हैं हमारे नेता जो है कि पीडीए के माननीय अखिलेश यादव जी, विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी और अन्य सभी विपक्ष पार्टियों के नेताओं ने द्वारा संसद के मुख्य मार्ग पर लगातार प्रदर्शन, धरना दिए जाने के बाद अब सदन में चर्चा हो रहा है और यह स्वीकार किया गया कि नहीं सदन में चर्चा होगा। नहीं, चर्चा भी नहीं लोग करते, कितना संवेदनशील है देश के प्रति और पर्यटकों में मारे गए परिवारों के प्रति। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कार्य करते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी संसद के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या शहीदों के प्रति उनके संवेदना नहीं है? हम चाहते हैं कि भारत को सत्ता चाहिए, भाजपा को सच्चा चाहिए और आप लोग जवाबदेही नहीं हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मेरा आग्रह है कि आप जवाबदेही बने, सदन में आकर के जवाब दें। राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर उन्होंने सेना की शहादत को भी प्रचार का जरिया बना डाला। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समाजवाद। तेजस्वी सूर्या जी, तेजस्वी यू वांट टू से समथिंग? माननीय मंत्री जी। जी, एक अनाउंसमेंट मुझे करना है, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। माननीय मंत्री और संसद सदस्यों के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था एमपी डाइनिंग फर्स्ट फ्लोर पे संसद भवन में की गई है। माननीय सदस्य गण कृपया सुविधा के अनुसार आज साय 8 बजे के बाद सुरुचि भोज का आनंद लें। धन्यवाद, थैंक यू। तेजस्वी सूर्या जी कहाँ बैठे हैं? किधर बैठे हैं? बेटे जी, अरे तेजस्वी सूर्या जी बोलिए ना। थैंक यू स्पीकर मैम, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में बात करने के लिए मौका दिए हैं। मैं सबसे पहले पहलगाम अटैक में जितने भी लोग के शहादत हुए हैं
उन सबके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। उनमें 3 लोग कर्नाटका से थे और मेरे संसदीय क्षेत्र से 2 लोग थे। उन सभी परिवार के प्रति मैं मेरा संवेदना व्यक्त करता हूं। मैडम स्पीकर, ऑपरेशन सिंदूर led by the Indian Army showed the world that no terrorist is safe anywhere in Pakistan. वो जहां भी हो भारत उनको ढूंढेंगे and भारत उनको न्यूट्रलाइज करेंगे. This was the resolve that भारत सरकार under the leadership of Narendra Modi displayed during Operation Sindoor. मैडम, ऑपरेशन सिंदूर के जो मिलिट्री एक्शन था वो इससे पहले के सभी मिलिट्री एक्शन से बहुत फर्क है इसमें और सबसे पहले में. This action was a new generation warfare, unlike all earlier warfares which were more conventional. In this we had foreign supplied drones, unmanned aerial vehicles, precision guided missiles, electronic warfare, a deceptive information warfare. ये सब चल रहा था. And the strength of the Indian armed forces was proved to be second to none in the world, because 80% of Pakistani weapons are imported from China, and it was India's air defense systems that had the ability to pierce through these Chinese defense systems, and we could reach our targets, the intended targets, in a precise way. The world today has accepted that India's military action through Operation Sindoor is a comprehensive and total military success. It was precise, it was non-escalatory, but at the same time it had devastating effects on the enemy. All of these years, no cost was paid by Pakistan for their misadventures. But since 2014, the new normal has changed, and if Pakistan dares to attack India, they will have to not bear the brunt of one eye for both the eyes, not one tooth for another tooth, but both the eyes for one eye, the whole jaw for one tooth. This is the new normal that Bharat has established. Madam Speaker, इससे पहले जब भी भारत मिलिट्री एफर्ट के माध्यम से अचीवमेंट हासिल किए थे, हम डिप्लोमेटिकली ऑन द डिस्कशन टेबल हमने उसको स्क्वैंडर कर दिए थे. कई सारे उदाहरण इतिहास में 1948 में, जिसका उल्लेख कई बार आया, our armed forces had breached the LOC, and all of what is today known as Pak-occupied Kashmir was in our control. But it was this Congress party and its leadership of that time that surrendered all of Pak-occupied Kashmir. What military achievement we had gained, we squandered on the diplomatic table. 1965 में भी वही हुई, 1971 में भी वही हुई. But the difference this time is the military achievement that we achieved in Operation Sindoor was crystallized and strengthened through our diplomatic onslaught that was led by the multi-party delegations and effectively led by the Prime Minister and the External Affairs Minister. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं. आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने TRF को डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रोस्क्राइब कर दिया है. मैं उस डेलीगेशन में पार्ट था जिसमें शशांक जी भी मेरे साथ थे, शशि जी के नेतृत्व में. हम कोलंबिया में थे. कोलंबिया had given a statement in support of Pakistan. After our intervention, Colombia withdrew its statement and gave a statement in favor of India. Every country in the world which matters has stood with India. This is the diplomatic strength that has been gained. Madam Speaker, मुझे परशुराम जी की एक युक्ति याद आ रहा है. उन्होंने कहा था, अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतम सशरम धनुः इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शास्त्रादपि शरादपि. उसी प्रकार से आज भारत डिप्लोमैटिकली हो, मिलिटरीली हो, दोनों युद्ध में तैयार है. एंड वी आर रेडी टू विन एट द डिप्लोमैटिक फ्रंट, वी आर रेडी टू विन एट द मिलिट्री फ्रंट.
मैडम स्पीकर, आज जितने भी कांग्रेस के अपने साथियों से भाषण हमने सुने, बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेता चेंज होते हैं पर कांग्रेस पार्टी का नीति वही है। 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है वो भारत को और भारत के सशस्त्र बल को सिस्टमैटिकली और डेलिबरेटली वीक करने का एक पॉलिसी है। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। At the very beginning of our independence, at the dawn of this nation, as an independent country, पंडित नेहरू जी की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि भारत को आर्मी का जरूरत ही नहीं है। जनरल लॉकहार्ट के पास बैठते हैं और नेहरू जी बात ये बोलते हैं कि रबिश, टोटल रबिश, नो प्लान्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी इज रिक्वायर्ड, इंडिया का पॉलिसी इज अहिंसा, वी डोंट नीड द आर्मी, पुलिस विल डू इट्स जॉब। ये नेहरू जी की सरकार की स्टेटेड पॉलिसी थी। एंड दिस डिड नॉट रिमेन आइसोलेटेड इन 1947 when A.K. Anthony ji was the defense minister. It was the stated policy. Madam, my party has allotted me 15 to 20 minutes time. Please give me the time given by my party. Madam, they had a deliberate policy of not building border infrastructure. और देश के आर्मी में जाति गणने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। और मैं बैंगलोर से आता हूं और बैंगलोर के HAL हो, DRDO हो, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली इन लोगों ने वीकन किए थे। 10 साल पहले HAL के पास ऑर्डर बुक्स नहीं था। आज HAL के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऑर्डर बुक्स मेक इन इंडिया के नरेंद्र मोदी जी के मेड इन इंडिया के कारण के वजह से है। इट वॉज अ डेलिबरेट कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी टू वीकन द आर्म्ड फोर्सेस। मैडम, रफाल की बात हो रही थी। द कंट्री रिमेंबर्स हाउ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन in an extremely irresponsible fashion tried to derail the acquisition of the all-important Rafale, and they also tried to derail the acquisition of Tejas into the armed forces. If it was not for our defense minister Manohar Parrikar, today LCA Tejas would not have been a reality in this country. They had tried to kill all of these made in India defense projects. Madam, 3 साल पहले जनरल बिपिन रावत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश को बताया था that India should be ready to face a 2.5 front war. मैं आज इस देश को इस महत्वपूर्ण सदन से बताना चाहता हूं कि दिस 0.5 फ्रंट जो है वो कांग्रेस पार्टी और इसके इकोसिस्टम है जो भारत के अंदर से भारत को खोखला करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं मैडम, और मैं तथ्य के साथ इसको प्रूव करूंगा। मैडम, आज कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के बार इतना बड़े बड़े बात कह रहे, बड़े बड़े बात, बट व्हाट हैज बीन द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी टुवर्ड्स टेररिज्म? मैडम, एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2004 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट दे डू? It was to repeal the POTA Act. 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री वी इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। मैडम, आप भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। आई वांट टू रिमाइंड यू मैडम, व्हेन राजीव गांधी, हाँ मैडम, when राजीव गांधी का ट्रायल चल रहा था, राजीव गांधी जी का ट्रायल चल रहा था मैडम, जब राजीव गांधी जी की डेथ की, टेररिस्ट से हुई डेथ की ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कोर्ट सेड we do not have exclusive terror legislations to prosecute. This was the state of affairs of this country. 2001 के बाद हमने पोटा कानून
लागू की, पर आप सरकार में आते ही पहली चीज आपने पोटा को ध्वस्त किया, यू रिमूव्ड पोटा। और क्यों किया आपने? आपके वोट बैंक के कारण आपने पोटा को बंद किया और उसके बाद 10 साल देश हर दिन